ओं नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दशाध्याय। श्री परीक्षितुवाच। अधस्तमो स्वभावेषु ब्रह्मन् वृत्तिष्वपाप्तना नारायणे भवति कथमासीत् गिरिरामति। देवानां सुधत्वानां ऋषीणां पञ्चलात्मनां भक्तिर्मुकुन्द कुलशरीनो नो प्रायेणापजायते। तदुपि समसंख्यातो पार्थिवैः हो जन्तुः तेषां ते केचन हस्ते श्रेयो वै मनुजादय। प्रायो मुमुक्षवोस्तेषां केचनेत्तादितमो मुख्यानां सस्येषु गतिर्मुच्यते सिद्ध्यति। मुक्तानापि सिद्ध्यानां नारायणपराणो सुदुर्लभमाशास्ताकुलिशमाम्नि। तेषु शोकटं पापो सर्वलोको लाभमीदं मूलमति नियमितस्तुवासित् संग्रामविलने। अत्र नो संशय भूयान् श्रोतु कौतूहलं प्रभु जो पुरुषेणो समरेशुवास। परिहितोऽथो सम्प्रसद्भावान् बादराणि निस्सिम्यो सदानेषु प्रतिनिन्द्यो वसुब्रवीवाच। ऋषावैतो राजन्नीतिहासमिमां यथा श्रुतं दैवायनमुखान् नारदाद्यविहिरन्। आसिदाय सर्वमं सुरक्षिणसु वैनुप चित्रकेतुरिति ख्यातकैशासि कामधूम। तैषवर्यासं सस्राणां श्रावं सन्तानि कसापि नीपे लेभेतासु सन्ति। रूपौदार्यो वेदो मे शुद्ध्यमिस्नादिभिः सम्पन्नैषो गुणैः सर्वैः चिन्ताबद्ध्या पतेरभूत्। मुठे समृद्ध सर्वामयी सेवामलोचना सर्वभौमेषु भूते साधन प्रीति हेतव। तस्यैकदातु भवनमङ्गिरा भावानपि लोकानुचरित अनुपासे दद्गस् ददिश्यया तं पूजयताभिव प्रतिष्ठानामर्षिभिः। पीतादिमुख्यापादित सुखासीनं समाहितं महर्षिष्टमुपासीनं प्रशयापनसङ्गितं। प्रतिपूज्य महाराजो समभ्यास्येदब्रवीत् ये अंगिरासु। अभिते नामयं सृष्टि प्रीतिनां जठात्मं यथा प्रीति उत्तेजि भूमानादादुष्टे। आत्मान् प्रीतिशेषो निधाया श्रेयो आप्नुरज्ञा तथा प्रीतया नरदेवाभिहिताराधम्। अपि छाया प्रतिमाइत्य भृता श्रीनित्य मन्त्रिणो पौराजनपदा भूत आत्मजा वशवर्तिन। जैसावतानु जैसे स्यात् सर्वे तद्वशगायिनी। लोकासुपाला गच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिता। आत्मना प्रियन्ते नात्मा प्रत्युषतो ये वाल्लखे शाकं त्वान् चिन्तया श्रावणं मुखम्। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनानपि स प्रशयापनत्याहो प्रजा कामस्ततो मुनि। श्रीचित्रकेतुवाच। भवन् किं विदितं तथोपज्ञानसमाधिवियोगिनां त्वष्टपाठापाप्नानां वैरन्त्यो शरीषु। रामपृष्ठो पुर्यां बृहन्नार्पि चिन्तितं भवता विदुषामेतु सुविदितानुयज्ञ। लोकपालेरपि प्रथो साम्राज्यै स्वपलालिकानो दण्डस्तद्यमाङ्कृतं कामदिव्यावि। तन्नपाहिमावागो पूर्वैषो गतं तमः यथा तमेव दुष्पारं प्रदया तद्विदेहि शिशुवासो। इतरितो भवान् कृपालु ब्रह्मनुषुतो। श्रापयिता सर्वं त्वष्टं त्वष्टारो महदद्विभु। ज्येष्ठा श्रेष्ठा रोजाराज्यो महिषीणां च भारसो नाम्नां क्रीतदुष्टिस्तस्मिन् दिव्योपरिष्टं समाधि। अथानुपीडनादं भवत्यैकान्तमात्मभू हरशोक परिष्टाभ्यामीति ब्रह्मसूतो। सापेतत्प्रपाशमेव चित्रकेतुरवोरयत् गर्भं प्रीतद्वादिभ्यं प्रीति कालेरिवात्मजम्। तैषानुदृतं गर्भो शुल्कैक्षो विभोरूपो वर्धे सूरसेनो अतिशे शनकैर्नृप। अथो कालोपावृत्य कुमारो समजातो जनयन् सुरसेनायां स्मृतां परमं वृषम्। अरिष्टो राजा कुमारेषु स्नातो सुचिरलङ्कृतो वासयित्वा स्नातो विप्रै कार्यामासो जातः। तद्यो हिरण्यं वासांसे भरणानिषु श्यामलान् हयान् गजान् प्राताद् विद्येनु मर्मदानि सत्। भवृषकामान्येषां पर्जन्यो हि बुधिहीनां देशो विशासं कुमारेषु महामनः। कृष्णलब्धेन वराजर्षेष्ठरोधिं। यथान्ये शैशो कृष्णन्ते धने स्नेहो बलिः।
मातु षष्ठीतरम पुत्रे स्नेहो सपिपुटु किजदूते सपत्नीनां प्रजा कन्या दर्वो यथकेतो दिति प्रयथादार प्रजापतिर्मोक्षानि संगद्य बालं लालयतुहनं तापर्यतामात्मानं गर्हयन्ति यद्यसूयया आन्पत्नीन दुःखेन राजस्यादरेण धीं प्रजां श्रियं पापं पत्नी प्रकृतिरां सुप्रजां सपत्नीनां वशानित्यसितां दासीनां कुरु सन्तापो स्वामी प्रजाविघ्नं दुर्गमानानां दैसदासी दुर्ग एवं सन्दिध्यमानानां सपत्न्या पुरुषसम्पदो राज्ञोपासुरजिना विद्येषां परमतो विद्यनाशतया धिता दारुणशिरसो स्वयं गुरुः कुमारायो दुर्मदा नृपतिं कृतदुबीजनं सपत्नीं मार्षं हर सुप्तं ये वेति शोचिन्त्या निरीख्यो वासगृहे श्यानं सुचिरं बालमपर्यो मनीषिणिनो पुत्रमावे भद्रेऽपि चतुरारे शोषयानमुपभुजो दृष्ट्वा चोट्टलोचनं प्राणेन्द्रियमराटोक्तं हठास्मीति तद्भुवि तैशास्त्राकर्णं भैषावरं तट्टुकराभ्यामुदिभूषैकैरपि प्रविशरज्ञी स्तयमानदारिगन्धर्षबालं सहसा मृतं सुतं पपाठ भूमौ परिच्छर्या सुजातमोह बिभ्रष्टरीरोरुहना ततो नीपान्प्रपूरतिशां जना नरांसु नर्चासु निशन्यरोदनम् आयुतुल्यव्यासना सुदु गीतासाञ्चोद्दालिकं रुरुदुकृतागस सुरामृतं पुत्रलखितान्तरं विनशदिशे प्रजपन् खलं बठि स्नेहनानुबद्धवीतया सुषापृशं विमुहरितोनुप्रगितिविलेख्य पाठो वालशिषो पादमूले मृषुदिशस्तमाशीरोवाल दीर्घं ससन् बाष्पा कल्वपरता विशुद्धगन्धोन्नोषसागभाजितं पतिङ्गरिख्योरु सुचार्पितङ्गरामृतन्द्रबालं सुतनीयकसन्ति धनेश्वराज्ञी अप्रेतेश्वरीजं सती दाहाना विलापजतथा नस्तनध्ययं कुसुमपङ्कजखण्डितं निरिञ्जति सन्तनाभास्वरिनिभिः विरकेशानं वीलसत्सयो सूतं सुशोभचित्रं कुरीयुरु सुदुष ओ विराटस्त्व बालिशो दृष्ट्वा स्यादिष्टानि रूपीयसि परेणो जीव परशैशो जामृतिर्परिजा तमसि ध्रुवो परः नहि क्रमसेति मृत्युजन्मानो शरीरनामस्तु तदात्मकर्मभिः जो स्नेहपाशो निर्धर्मये संकृजते इमं विस्मृति त्वं तातो नार्हितो मां कृपानुसां त्यक्तं विचेख्यो पितरं तवोषु शोकदत्तम् अञ्जस्तरेण भवता प्रजातिस्तरं जष्टान्तं नो जध्यारुयेणो जमीन दूरम् उतिष्ठतातोषो तो इमे शीर्षे वयसस्त्वामवन्ति निबन्धनो संविहर्तुं सुप्तशीरं दशनयाह्वान् परितो मृत्युस्तनं पीबो शुचो हरो निशकाना नाम तनुरुद्यदिशे हठ मङ्गलाति दुग्धचरितं मुदितविघ्नापं किं वा गतेषु पुनरश्वामनीतं विशेषणोति कलापयन्ति श्रीवास विफलञ्चामृतं पुत्रवती लाभिस्त्रिकेतु नमोस्तुं मुदकण्ठोरुरोधः तयोर्बिलपतो सर्वे दम्पत्या सुतव्रता रुदु स्मो नरा नारदा सर्वमादि अशीदशाम् एवं कस्मन्मापन्नं नस्त संज्ञानायकं ज्ञाताङ्गिरा नामो ऋषिजगामो सनाद इति श्रीमद्भागवतमापुराणपादवैयासिकायां षष्ठस्कन्धे चित्रकीटोपाख्याने चतुर्दशाध्याये श्रीमद्राधागोविन्दसच्चिदानन्दबल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna Govinda Hari
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचदशाध्याय जुवासु उचतु मृतकापास्ते परितं मृतकोपम शोकाभिमुतं राजानं बोधयन्तु द्रुतिभिः। कोऽयं स्यात् राजेन्द्रो भवान् जगन्मासि सन्तशुकिदमशिष्टो स्वराजनाम यथा प्रयान्ते संजान्ते श्रोतवेगेन बालका संविद्यन्ते विविधस्ते तथा कालेन तेहि यथा रहानासु वैवानाः भवन्ति नो विजतिमि एवं भूतानि सुवितानि हो समाय वयन्तु तञ्चो जयते मे तूला कालो चराचरा जन्ममिचो यथा पश्चात् प्राङ्नैः जम वधुनापि भूतेर्भूतानि भूतेषु सुरकारिभिः हन्तिषु आत्मशिष्टैरशस्तैरनपेक्षेभिः बालवत् देहिनो राजन् देहादेवो पियाते बीजादेव यथा बीजं वेद्यैवो शाश्वत देजीमवागोऽयमपि पूरा ज्योतिर्व्यक्तिभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः। शिशुवासो येमसादितो राजा चितकेतुर्जितमो मृग्मीश्वपाणिनावक्त्रं लीयमानो शुभात् राजोवासो को युवां ज्ञानसम्पदौ मयि सौषो मयिषाम् अवधूतेनो वेशेनो गुरामीगो समागम तरन्ती जपसुकामं ब्रह्मणा भगवत्प्रिया ददृशां ग्रहबुद्धीनां गोदायुं कुमारो नाटोरीशरङ्गिरा केवलोषितो अपांशस्तरसा व्यासो मार्कण्डेयथो गोतो वशिष्ठो भगवान् रामो कपिलो वातराणि दुर्वासा यज्ञबलव्यासो या जातु कर्ण खारु रोमवचालो वृतो आसुरी शरसंबली ऋषिर्वेदो मही धौम्या मुनि पंचशिखाम् इदन्नाव कौशल्यासुदेवो तिरद्धयो येते परेशो सिद्धे चत्वारन्ति ज्ञानहेतवः। तस्माद् युवाङ्ग्रहपाशेन मुरवियो प्रभु अन्धे तमसि जन्नेषु ज्ञानदीपो उद्युज्यता ये अंगिरासु अहंके पुटकामेषु उपततो हस्म्या अंगिरा निपो येषु ब्रह्मसूतो सख्यानायो भवानसु इत्थं त्वां कुतशोकेनो मग्नां तमसि दुस्तरी अतः दरः मनुष्यासु महापुरुषगोचर अनुग्रहा भवतो प्रप्तावानि हो प्रभो ब्रह्मण्यो भक्त्यं विद्यानादादि बोधि तदैव मे परं ज्ञानं तदैव ये मेदिनां ज्ञानानानाविषये पुत्रमदाहो माम्यहम् अधुना पुत्रनां तापो भवत्येरानुभूयते एवं दारा गृहारामविधे सर्वसम्पदा शब्दाज्ञानसो विषयाचाला रज्जावितयो महिरज्यं बलं कोशो भीत्यामात्मं सुहृद्जना सर्वेपि सुरसेने मे शोकमोहा भयादिरा गन्धर्व नगरप्रख्या स्वप्नमाया मनोरथा दृश्यमाया विनार्थेनो नो दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभेद्यातो नानाकर्मणि कर्माणि मनसोमन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानाख्यापनो देहिनो विविधक्लेशान् संतापो शूलोदाहितः। तस्मात् षष्ठेनो मनसा विनिशो प्रतिमात्मनो दैते ध्रुवार्थविश्रमं तपोपसा समाविशो नाडोवासो यथा मन्त्रिनिजं च शून्यते मम जां धारयन् सप्तरस्रा संकर्षणाविभु जत्पादमूलपश्वेषु नरेन्द्रपूर्वे सर्वार्यो ब्रह्मविरङ्गीशं विसीय शैत्यस्तदीयमातुलमधिकं महितं प्राभु नभावपि परं नः चैराद्युपैतिः इति श्रीमद्भागवतामहापुराणसंहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुपख्याने पंचदशाध्याये श्रीमद्राघवेन्द्र कृष्ण प्रचानंद बल हरि बोल। सद्यासुपादरानिवासम् अथो देवारीषिराजन् सम्परेतं निपात्मजं दर्शयित्वेति होवासो ज्ञाति नामो मनुष्योत्तरम्
नाडो वासु जीवात्मना पैसो बद्धन्ते मातरं पितरंसजो सूर्यो बन्धवशुषा तत्क्रियावश कलेवरं समाधिषु शेषमायु सर्वेषु भुङ्ख भोगानुपित्री प्रत्तानापतिष्ठोन्नीपनं जीववास कस्मिन् जन्मवती मध्यं पितरो मातरो कर्मभिग्रामराजयो देवतुल्यं बन्धु ज्ञात्वा रमज्ञानवसितमित्रोदासीन बिभ्यश सर्व एवो हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो यथा वश्री पश्यामि हेमादीनि तदस्ततो परजातस्ति नरेशैवं जीवो जोनिषु कल्पिषु नित्यशार्थेषु वन्देषु ध्यानञ्ज्योतिषतेषु यावद्देशो हि सम्बन्धो ममत्वं तावद्देव हि एवं जो नियतो जीवो सोनित्यो निरसंकुश यावत् जत्वपलभ्येत तावं स्वयं हि तेषु येषु नित्यतयो सुखमबधो सर्वाश्रयो श्री आत्माना गुणनिर्विमानं स्वेति मदे सन्ति प्रियागस्मिन् प्रियोषो सोऽधिया एको सर्वधियां संसार कर्तॄणां गुणदोष नार्तो आत्मा घी गुणं दोषं नो क्रियाफलम् उदासीन परावरदीश विवादानुवासो इति दीर्घो यतो जीवो जातेषु तेजरापि स्वितामुषु शोकं स्थित्वात्मा स्नेहशृङ्खला निरीजो ज्ञात्वादिकृतियो क्रिया कृतजुषो विरासनादशोकमोहो भयाजिता बालज्ञो विरामेश्व बालक्याशा प्रभो बालस्यावृतं ब्रह्मणो नीरू जमुनायां महाराजो सरस्वत्यादिस्थिता रोहितं प्रतिबुद्धात्मा चिदकेतु ज्योतिभिः ग्राण्डकूपादिभिर्भ्रान्तो सरपङ्गदादिभिः दीपा कालिन्द्यां विधिवस्नात्वा कीर्पुण्या जलक्रिया मौनेनो संयतस्नातो ब्रह्मपुत्रा वन्दितो अथो तस्मै प्रपन्नाय भक्तायां प्रजात्मने भवान्नार्दोत्थितो विद्यासीतामुवाचः ॐ नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमो संकर्षणासु नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्ति आत्मा रामो संताय निर्गीतद्वैदृश्ये आत्मानन्दानुतेयो निःसुधर्मामुते ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनन्तमूर्ते वासस्यो प्रत्यप्राच्यो जो एको मनसासु अनामरूपचिन्तायासु द्वैतो सरसपर यस्मिन्निदं जलचीदं तिसरेप्येते भाटो मृतन्येति मज्जादासहिते ब्रह्मणे नमः जन्नो श्रीसन्ति नो बीजो मनो बुद्धि क्रियात्मजो अंतर्भीषो भीतरं व्योमगता विमोहन देहेन्द्रिय प्राणमनो विरोधमयि जरं शीतो विसरन्ति कर्मसु न जन्यता लौहमयि प्राप्तं स्थानेषु तद्रूपतदसमिति नमो भगवते महापुरुषाय मानुभावाय महाभिभूतिपतये सकलपथपरिसनाय करणाय कमलकुटनालापो लाले शरणारविन्द मुकुलेभ्यः परमेशिनो नमस्ते यशोवाचो भक्तारेत्यां प्रपन्नायो विद्यामादिशो नारदो यथा अंगिरसो साकं वामो सन्मुखो यतिकीतुषो सां विद्यां यथा नारदभाषितं कारयामासो सप्तामङ्गलसो सुसमाहित ततोऽसो सप्तरात्रान्ते विद्याधार्यमानया विद्याधराधिपन्तिजो लेभे प्रतिहतं नृप ततो कतिपयामासान् भविष्येन्नोमतीर्थो जगामतीर्विषु शेषेषु शरणान्तिकम् मृगालगौरं शीतिवासं स्फुरत्किरीटकेयूर चरित्रकङ्कणं प्रश्नवक्त्रानुलेशनं वृतं ददर्शो सिद्धेश्वरमण्डलैः तद्दर्शनध्वस्तमस्तकिल्यसु षष्ठामलान्त कोरनोभ्यां प्रविद्वत्या प्रणया सुलोचना प्रेषरोमानमरादिपुरुषं को उत्तमश्लोकापदा जीविस्तभं प्रेमाशूले वैरासुमति प्रेम्णो परार्धलवना निर्गमे स्यात्सो प्रसेतां तु तुङ्कीरं ततो समादाय मनोमनीषया भवासु एतत्प्रति लब्धकामासु निसैन्यो सवेन्द्रियवामवर्धनं जगद्गुरुं सततोऽस्त्रा विग्रहम् इत्यतिकेतुवाचो अजितजितोऽस्मभिर्वेद साधु विवान् जितात्मभिर्विधा बीजतास्ति अति कामात्मनां समदाति करुणा
सर्वोभियो खलु भगवन् जगद्भूतदयस्थितिलयाति विश्वसीदेस्ति असांस्तातो नृषामर्शन्ति पृथग्विधान्विति परमाणु परमहंसते स्वताधिकमर्ति च विधूय आदाहस्ते सत्त्वानां जग्ध्रुवं तदे देवान्त प्रलालेपि इत्यादि विवेकीलावृत सतिभिर्दशगुणैरण्डकोशे यत्र पतन्त्यानुरूपो सन्धारकोटि भीर्दन्त अनन्त विषयाभूषो नरा पशवो जो उपासते विभूतिर्नो परन्ता तेषामाशिषो ईशो तरणो विनश्यति जरा राजकुलं कामादिस्तैः रुचिरा परमा रोचन्ति यथा कर्म बीजान् ज्ञानात्मन्या गुणविषये गुणन्यजा दण्डजरान् विअजितमजिततरा भवतादराहो भागवतं धर्ममन्यपद्यम् निश्चिन्तनादि मुनियो आत्माराम जमुषा पाति अववर्गाय विष्णुमतिर्नो जत्रुणीनाथमिति ममो भवेति सो जरण्यत्र विषमिधयादास्तेवो सद्य विशुद्धऋषि कैष्णुर्धर्म बहुल कोखेमो निजपरयो कियानपार्थो स्वपरद्रुता धर्मेनो सद्रोहातो कोपो परमसंपीरायो तवाहो धर्म नो विचरति जवेख्या जयध्याभियतो भवतो धर्म स्त्रीसरसत्तो कदम्बस्य पृथक् दियो यमुना वसते त्वर्जा नहि भवन्नहि वातुं मे तदृशा नानिपो अखिल पापखिल जन्नाम कृष्णवात् पुरुषेऽपि विमुच्यते संसारात् अथो भगवन् वयमुननातुरवलोकं निष्ठयामला ऋषिगणादर्घितं तवञ्च कथमेन्यथा भवति विदितमनन्तजमन्तं तवो जगदात्मनो जनैरहितात्मजां विज्ञाप्यं परमगुरो कीर्तिमीवो सवितुरीवो खद्येते नमस्तेभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयार्यसा दूरगसहिता आत्मगते कुयोगिनां भिदा परमंसाय जं वै स्वतन्त्रमनु विश्वशीयो वसन्ति एकीतु मनु उतरो उचकन्ति भूमण्डलं सपर्शायति श्यामोनि तस्मै भगवतेस्तु सहस्रमूर्धे यशुवासो संस्कृत्यो भवान्नीवमनन्तभासतो विद्याधरपतिं श्रीपति चित्रकेतुं कुरुद्भः विभन्वासो जन्नारदालिङ्गरुभ्यां ते व्याहृतं जेनुशासनं संसिद्धो शीतया राजन् विद्या दर्शनान् अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनो सर्वब्रह्मो परं धामो परं ब्रह्मो नमस्ते सरस्वती लोके विरतामात्मानं लोकं चापि संहृतम् उभयः यो मया प्राप्तं मया व्यक्तं मयि चैवो भयं कृतं यथा शुद्धपुरुषो विश्वं पश्यतीत्मनि आत्मानमेकाग्रं मन्यते स्वप्नबुद्धिः एवं जागृतानि जीवस्थानि सात्मनो मायामात्राणि विज्ञायोतस्तोत्रं परं येन विशुद्धपुरुषो स्वापं वैदात्मनस्तदा सुखं नित्यं ब्रह्मो तमात्मानमदेहि मां वयं स्मरतो पुंसो प्रदा प्रस्वापति बोधिये अन्येति विचिरीचरि ज्ञानं ब्रह्मोत्तरपरं यदि तद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमाप्नुं ततो संसारी तेषु देहाद्देहो मृतिर्मृति लब्धेहो मानुषं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवम् आत्मानं यो नो बुद्धिते नो कीर्तिक्षेममाप्नुयात् स्मृतिरायां परिक्लेशं ततो फलविपर्जयम् अभयं चाप्यानितं सङ्कल्पाद्वीरमित्कवि सुखायु दुःखमख्यायु कुर्वादे दम्पतिः ततो निर्वृत्तिप्राप्ति अखिलेषु सुखैः एवं विपर्ययं बुद्ध्या नीनां विज्ञाभिमानानात्मनसु गतिं सूक्ष्मां स्थान विलक्षणम् देशश्रुताभिमद्भिर्निमुक्तो तेषा ज्ञानविज्ञानसंयुक्तां मद्भक्तो पुरुषो भवति एतावानेयो मुनिजो नैतो पुण्यपुण्यभिः स्वर्षसमर्पणाज्ञेयो जयत् परात्मैकदर्शनं तमेतस्सदया राजन्
न परमट्टो बसो ममो ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयामासु सिद्ध्यति शिशु श्रीशुकुवासो आत्मस्वास्थ्यैषु भावान्नित्यं चितिकेतुं जगद्गुरु वैश्वस्तैषु विश्वात्मा तरुसान्तर्जलीह इति श्रीमद्भागवते महापुराणपारमसां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे चितिकेतुपख्याने षोडशाध्याय श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण कृष्णानंद बल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सप्तदशाध्याय शिशुवासो जटसन्तर्हिते अनन्तयकृत्वादिशे मनः विद्याधरचित्रकेतु गगनेश सोलख्यं वर्षलख्यानामव्याहत बलेन्द्रियस्तूयमानो आयोगी मुनिविश्रसारणे कुवलाचेन्द्रतोणीषु नरासं कल्पसिद्धिषु रेमि विद्याधरिस्त्री भवान् हरिमिश्र एकराशि विमानेनो विष्णुपत्तेनो भाषसा गिरिशन्तादृशे गच्छन् प्रीतं सिद्धसारिणे अलिङ्गा प्रीकृतां देवीं बाहुना मुनिसमरी वासुदेव्या शृण्वन्ता जहासो उच्चैः सदन्तिके चित्रकेतुवासो येषु लोकगुरु सख्यात् धर्मं भक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्या सभायां वै मिथुनी भूयो वर्जया जटाधरस्त्री बतपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृतो स्त्रियमंत्रिगत स्त्री प्राकृतथा रासोपरिदशापि स्त्रियं रसि विवृति अयं महाव्रतबलियो विवर्ति रामस्य श्रीवासो भानपि तस्सदया प्रैषागिन्यको तुष्टिं बहुगो सरसि सभ्यासो तनुव्रता इतद्विद्यमानसि ब्रुवाणे वर्षद्वनरुषाहो देवी दृष्टायुनीजितात्माभिमानिषु पार्वतीवासो अयं किमुपानो लोके सन्तादनधरो प्रभु अस्मद्भिमानं दुष्टायां नीलज्ञानस्य विप्रभु नो वेदो धर्मं किलो पद्मजोनिर्ब्रह्मः पुत्र भृगुनार्दन्ति नो विकुमारा किलोदनिषुजो नो निषेध अन्त्यातिवर्तिनं हरि येषामनुध्येय पदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं जो क्षत्रबन्धुपतिजं सूरीं प्रशान्ति वृषदयं हि गोतप्ता नायमतिर्हि वैकुण्ठपादमूलपार्पणं सम्भावितमर्ति स्तब्धो साधुभिः पर्यपासितम् अतो पापे संयोनिमा सूरीं द्विते दुर्मति दधिरो भूयो माता नो कर्ता पुत्रकिल्यश शिशुवाच एवं सप्तचिते केतु विमान वृद्धसो प्रसादामावसतिं मुग्नानाम्रेण वार्तशिक्षितिरुवासो प्रतिनामिते शापम् आत्मजीवना निलम्बिके देवीर्मर्त्याव जो प्रोक्तं कुर्वन्त्य कुर्वादिष्टं हि तेषत संसारचक्रे ये तस्मिन् जन्तुर्ज्ञानाविमोचितो ब्रह्मन् सुगन्धदुःखञ्चो भुङ्क्ते सर्वतो सर्वदा नैवात्मानो परसापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयो कर्तारमनिषापि आत्मानं परमेश गुणप्रभाव ये तस्मिन् को शापो को धनुग्रह को स्वर्गो नरको को वा किं सुखं सुखमेव येषोऽधिष्ठति भूतानि भवानात्ममाया येषां प्रियञ्चो सुखं दुःखञ्चो निष्किलम् नो ते सुखजदायितो प्रतिपूर्णो ज्ञातिर्बन्धुर्नो परो न शोष समेषु सर्वतो निरन्तरेषु सुखो नो रागो कीर्तियेषु दोष तथापि तत्शक्तिमार्ग येषां सुखाय दुःखासु हिताविताय बन्धाय मोक्षासु मृत्युजन्मयाशयिनां संशीते जब कल्पते अथो प्रसादे नो त्वां साहुमुख्याय वामिनी जन्मनिषे हंसा जोक्तो ममोतर्क्षमतां सति शुभासो इति प्रसज्योगीशंसितिकेतु रञ्जितं जगामो स्वभिमानेनोपसितो स्वया तोस्ते तदस्तु भावानुद्रो रुद्रानीमिदमब्रवीत् देवर्षि सिद्ध्यानां परसदानां च अर्णाद्यसिद्धिनां श्रीरुद्रवासो दृष्टव्यतासि शुक्रोनि हरत् अद्भुतकर्ममाहात्म्यं विभूतातानो निष्क्रियां महात्मनः
नारायण पराशर्वेनो कुटनो बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेपि तुल्यार्था दर्शन देहिनां दे संयोग बद्धानि सरलीलया सुखं दुःखं तीर्णो जन्मशापो नुग्रह ये विशो अविवेको कृतो पुंसो दर्शवेदो इवात्मनि गुणदोष विकृतं विवेदो सविसत्कृतम् वासुदेवी भगवती भक्ति मूर्धतां नृणां ज्ञान वैराग्य निर्यानानो हि कच्चिदवश्य नाहं गिरिंचो नो कुमारनार्षो नो ब्रह्मपुत्रो मुनियो सूर्यस्य विरामदेशेति वस्काममजा कामरूपं कृतभीष्मी नो नज्ञास्माति प्रियं कच्चित् प्रियोऽसो कोऽपि वा आत्मानं सर्वभूतानां सर्वभूतो प्रियो हरि तैशोचायं महाभागस्थितिकेतु प्रियात्मजो सर्वतो समतु सन्तु ह्यहञ्चैवाच्युतप्रिया तस्मान् विष्णु कार्यो पुरुषेषु महात्मनो महापुरुष भक्तेषु शान्तेषु समदर्शि इषु वासो इति श्रुता भवतु शिवे सेमाभिवासितं भूभु सन्ति राजन् देवी विगत विस्मया इति भावतो देवा प्रतिसप्तो सुमङ्गलं बुध्नासु जगृहे शापं मातविदं साधुलक्षणं यज्ञे कस्तूर्यन्यासो मानवी योनिमाश्रितो विष्णु इत्याभिमख्यातो ज्ञानविज्ञानसंहिता एतत्ते सर्वख्यानधर्मां त्वं परिपृशसि ब्रीजस्य सुजातासो टाङ्कारण भगवन्मति इतिहासं पुण्यं प्रतिकेतु महात्मनं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा पद्ध्वा देवीमुच्यते जो एतत् प्रातुर्धाय श्रद्धया वाग्यतो पठेत् इतिहासं हरिं श्रुत्वा स्वजाति परमाङ्गतिम् इशं महापुराणपावनवैयासिकां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुपाख्यानं सविदस्य ध्याय श्रीमद्राधागुण कृष्णप्रदानंद बल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय अष्टादशाध्याय श्रीवासु प्रियश्रेष्ठो पत्नी सवितु सावित्रीं व्याहृतिं तयि अग्निहोत्रं पशुं सोमं धातुर्मह्यं मायामखिलं सिद्धिर्भगेश्वर भार्यासो महिमानं विभुं प्रभुम् आशिंसो वरारोहां कन्यां प्रसूतो सुविता धातुकुशिनिवाली राखीशानुमति सुता सायं दर्शमथोत्पातो पूर्णमासम् अनुक्रमात् अग्नि पूरी श्यामार क्रियायामनुदसबोधर्षणि गुरुनासीन देशजातो भीमन वामेकंचो महायोगी वामनिकार सुकीलो आगस्तंचो वशिष्ठंचो मित्रा वरुण ऋषि रेतो शिशि चतु कुंभे उर्वैशो सनिरुकृतम् रेवत्यां मित्रो सर्गामिष्टं पिंपलसं व्यथात् पौलोम्यामेषो आदत्तोतिं पुत्रानीको नो श्रुतयो जयन्तम शिवं तातो तृतीयं मीलुनं प्रभु उरुक्रमेशो देवैशो माया पावनरूपिणी केटोपद्भ्यां दृश्योतो कैशासन् सौगरादितो तत्कर्मो गुणगिरिजाने कश्यपैशो मात्मनो पश्चाद्दैत्यमहेन्द्रा आदित्यं तथैव भटारः अथो कैश्य पदायां दैत्यान् कीर्तयामि ये भगवतो श्रीमान् प्रह्लादो बलिदेवसो द्वितीयद्वादशदायासौ दैत्यदानवपण्डितो हिरण्यकशिपो नामो हिरण्यकेतु कीर्तितो हिरण्यकशिपो भार्या कयाधो नामो दानवो जम्बैशोतनया सातु सूरी चतुरसुरा प्रह्लादं अनुरह्लादं राधं प्रह्लादमेषु तस्सुरासिंहि कानां राहुं विप्रचिकित्से क्षीरोदरस्वं हरिचक्रेण पीबतो अमृतं प्रह्लाद संहारैषु मतिर्भार्याशूतो पञ्चजनं तदा राधैषो धवनिर्भावो शूतो वाता विमङ्गलं गुहायो श्रुतिजे पेटो वाता मे अनुग्रहादेशे सुजायां भास्करो मैषे सदा वीरोचनस्तु
प्रह्लादव्यं तैषा भद्बली वाणिज्यस्तं पुत्र शतमस्तायां तदोहव तेषानुभावं सुश्लोकं पश्चाद्भादो विश्वे भानुवाराज योगी संलेभे तद्गुणाग्रहं तद्वार्थे भवानस्ति जग्जावि पूर्वपालक मरुदंचोदीके पुत्र चत्वारिं सन्नवारिका सुहासं प्रजा सर्वानपि इन्द्रियेण सन्तया श्रीराजोवासो कथं तु आसुरिं भावो अद्योग्यपतिं गुरु इन्द्रेण पापिरासज्यं किं तत् सारुतं हितै इमे सन्धते ब्रह्मऋषियो हि मयासो परिज्ञानायो भवतां स्तन्ये व्याख्यातुमर्हति श्रीसुतोवाच तद्विष्णुनाथेशोपातरनु स्वनिसैम्याद्रितसङ्गगुमदर्शत् सवादयन् सैन्यभीतेन तेह जगामो सत्रायन् सर्वदर्शन शिशुवाचो हरपुत्रादिति सकृपार्श्वे गृहेण विष्णुना मणिना सोदण्डेन ज्वलन्ति पर्यकिष्टयत् करानुता त्रिहन्तारमिद्यात्मालुन आविक्लर्हियं शापं घाटयित्वाशेष्वन् क्रीमीभिः सह संज्ञा राजसेव्यर्जन भूतदृक् तत्रीते स्वार्थो किं वीरचोदित आशासानेषु तस्येदं ध्रुवबुद्धिषु चिरषु अमाशोगेषु भूयात् येनो सुतोहिमे इति भावेन सा भर्तुरासारात्मोक्यं शुश्रूषयानवेगेन शुषेण दमेन च भोक्त्यो परमया राजन् मनोज्ञैव स्तुवार्षै मनोग्रहायो भावज्ञा विस्मितापाङ्गदुःखिनी एवं स्त्रिया जरीभूत विद्वानापि मनोज्ञया वारमित्याहो विवेशो नो तत्कितं हि दोषितः खीलोक्यैकाण्डभूतानि भूतन्यासो प्रजापति श्रियं चक्रं स्वदेशार्थं स्वया पुंसामतिष्ठिता एवं शुश्रुधियास्तु भवान् केशवोऽस्य प्रेषो परमप्रीत्यादिति माहो विदन्ति केशवोवाच वरं वरयो वामोरूपितस्ते अभिननितेस्त्या भर्तृषु प्रीते को कामो ईवोषागम् पतिदेव हि नारीणां देवितं परमं श्रितं मानससर्वभूतानां वासुदेवो शिवपति येषो देवतालिंगे नानारूपो विकल्पिते विद्यते भवान् पुंभे स्त्रीभिः पतिरूपति तस्मात् पतिव्रता नारदा सुविद्याधुरां पति दध्यान्ति अन्यभावेनोपतिमात्मानमीश्वरं सोऽहं त्वर्षिता भद्रै दक्षेण भावयतोति तं ते समृद्धकामक्षितां सुलभम् दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रस्य आनुर्दिम् अमृतं मृतपत्राहं तेनो मे घातिमंसुतो निशम्योतर्वसु विप्रो भीमनां परितोप्यतो अहो अधर्मो सुहानज्यो मे समुपस्थितः अहो अर्थेन्द्रियारामो जोषन्मयो माया घृतशीरसां कृपणोपनो पतिश्री नरके को अतिविरजामनुसारः असप्राविभो जोषितो धिम्नां गतां वा स्वार्थी व्रतां प्रीत्यन्द्रिय शरत् पद्मो शवन वक्त्रं पठन्तो श्रवणामृतं हृदयं क्षूरभाराटं स्त्रीणां को वेदो च शिरं नहि कचित् प्रियो श्रीरामनसा स्वामिर्भावनां पठिं पुत्रं भ्रातरं वा जनार्थी घाटन्ति प्रतिश्रुतं गवादरानीति वचस्तन्नो मृषा वेद बधं नारसीचन्द्रोऽपि तत्रिरामुपकल्पते इति सञ्जितो भवान् मरीचि कुरुनन्दन उवासु किञ्चित् गोपीतं आत्मानं सुविगर्हे केशवोवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रादेवाण्डवा संवत्सरं व्रतमिमं यज्जन्तो दारिष्यसि हे अदितिरुवाच दारिष्य व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कर्जानि जामि यज्जानिषि हो निषिद्धानि नो व्रतं धन्ति जानीते केशवोवाच नो हिंसात् अद्भुतानि हो नो यशपिन्नुनिपं वदे नो चिन्दिष्या क्रोमानि नो स्पृशेयवनम्बरम् नाथुषानुकूपेतो नो स्वावेन दुर्जनं नो वशितामद्यन्तु धृतामति नो अदिष्टं तन्निवारसुं समिध्यं विशलायं भूञ्जितो त्यनया दृष्टं दीपेन्दली हिनाथो नो चिद्दष्टावृषा साले ससनवां मुक्तिकेशे अनार्थिता त्वापगर्णां संस्कृत्या बहिर्षे
नारुटप्याह प्रजा नारुपादा उदक्षिरा शरीरो नापांग नेंगे नग्नानसु संधे गौतवासा सुचिन्नित्यं सर्वमंगल संयुता पूजेत प्रातरासायो प्राप्ति प्राण श्रीमचिता श्रीयो वीरवतीं सार्जेत श्रगंधा विलुम पति कर्जार्य ध्याये कोपष्टमतंततम संवत्सरं पुंसवनं प्रथमेतद् विपृतं दारिशसि चेतुभ्यं सकुटावितासुत पारमित्याभ्युपेत्याथो दितिराजन्मामना कश्यपा गर्भमादस्तु प्रतंचास्यु दधायस मातृशशुरभिप्रायमिन्द्रो अज्ञायमार्दशुशने मदस्तानीतिं परिजातरत्कवि नित्यं वनात् सुमनसा फलपुष्पाणि करात् पत्राङ्कुशुरादिविकाले काले उपाहर एवं तरा प्रदेशस्या प्रदेशिन्नं हरिरिपु प्रेक्ष्यो परिसराविन्दो मृमे भूमिगा नैध्यागस्य व्रतसिद्धं तत्परतो वह्ययति चिन्तां तिग्रां घटस्य सुखेनो शासि पतिञ्जय एकदा सा तु सञ्जायामुदिष्टा व्रतकर्षिता आश्रिष्टा वरदा धौतङ्घ्री शूढाभूविधो विधिमोहिता लब्धातरन्त्रं सकृन्निद्रापुरितं किलशुद्धिष्टे प्रीतोदरं योगेषु जोगमाया सकर्षो सर्वरागर्भं वद्येनो कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधैकस्थं मारोधीरिति तान् पुनः तमुषु पत्यामानान्ते सर्वे प्राञ्जलयो निपो किं नो इन्द्रो जिगांसाति भ्रातरो मृतस्थं माभीष्टो भ्रातरो मुह्यं जूयमित्याहो कौशिको अनन्तभावान् परशुरानात्मनो मरुताङ्गनं नो ममारोति ये गर्भो निवासानुकम्पया बहुधा कुशला खिन्नं द्रोण्यासेनो यथा भवान् स्वकृद्दिष्टादिपुरुषं पुरुषो जाति संयतां संवत्सरमिदं किञ्चित् न्यूनं द्वितीया दशद्वरीरचित संजोरिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुते भवन् व्यपद्यो मातिदोषं हि हरिणा सोपाकृता तिथिरुठायोतदिशि कुमारा नलप्रमिन्देनो शैताव्यापी पर्युप्लवते सद्विन्दिता तेन्देमाहोतराः आदित्यानां भावयम् अपत्यामि शयन्त्यारं प्रथमेत सुदुष्करम् ये को संकल्पपुत्रेषु सन्त्यप्य तपतं जदीवो बीजं पुत्रं शैत्यं कथयमामृषा इन्द्रवासो अम्बोतेयं विभिषितामृषाजन्त्यगं लब्धातीतं विशङ्करमीथुनधर्मति केतो मे सर्वदा गर्भुवासन् सप्तो कुमारका तेऽपि चत्यकेषु जप्तैः सर्वदा नापि ममी तरसत् परमासत् भिक्षो विभीषितं मया महापुरुष पूजा सिद्धि वैशवानुरंगिनी आराधन भवतु ईशमाना निराम सिद्धेतु निःश्री परं ते स्वारसपुरुषावा स्वीकार अरध्याप्रदं दस्मन् स्वप्नान् जगदीश्वरं कोवितो गुणस्पर्शो विदोषान्नरको तरिदं हि तदरं ममो दौर्जन्यं भजन्सो मयेसि चतुर्मर्षि मातरं दिशा गर्भो मृत्युर्दिशा शिशुवासो इन्द्रष्टयाभ्यानुगतो सुधावेन तस्या मरुद्भिः शरणां नत्वा जगामूर्तिजम् एवं ते सर्वख्यातो जन्माङ्गं परिश्रीमङ्गलमरुतां जन्मो किं भूयो कथयामि ते इति समभावमापुराणे परमसां संहितां वैयासस्कां स्वस्कन्धे मरुत् उत्पत्ति अष्टादशाध्यायः श्रीमद्राघवेन्द्र कृष्णपितानन्द बल हरि बोल। भगवते वासुवानु एकोनविंशत्याय श्रीराजोवासु व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता दुर्जयशरणतेषु विदितुमिच्छामि देनो विष्णु प्रसीदति शिशुवाच शुक्ले मार्गशीर्षे पक्षे जोषित् भरत अनुज्ञया आरभ्येतु व्रतमिदं सर्वकाम अवादि निसंयो मरुतां जन्म ब्रह्मानुरज्ञया स्नात्वा शुक्लवती शुक्ले वशीकृत शरणकृति
पूजे प्रार्थना सार प्रावसन सियापति लंकी निरपेक्षाय पूर्ण काम नमस्तुते महाविभूतिर्पते नमो सकल सिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्याति सा मयि मोयसा दुष्ट ईश गुणैः सर्वैरतोऽस्मि भगवान् प्रभु विष्णुपति महामायी महापुरुष लक्षणे प्रियता मे महाभाग लोकमातर नमस्कृते ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये महासहो विभूति मूलहरामीति अनेनाहरः मंत्रेणो विष्णोराराधना अर्घपद्यो स्पर्श स्नान उपवास उपवीत यज्ञोपवीत गंधपुष्प धूपदीप हारा उपचार आहार सुसमोपाहारे अभिषेचन जो जुहुया आनले द्वादशाहुति ओं नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति श्रियो विष्णुंचो वरदाशीषां सर्वावभौ भक्त्या सम्पूज्या नित्यं गरिष्येत् सर्वसम्पद प्रणमे द्वादश भूमौ भक्ति प्राणेन शिरसा दशवारं जपेन्मत्रं ततोऽस्त्रोऽयमुदीरयेत् जुढांसो विश्वेषु विभू जगतो कारणं परम् इयं हि प्रकृति सूक्ष्म मायाशक्ति दुरत्यया तैषा आदि सर्वसख्यातमेव पुरुषो परो त्वं सर्वज्ञानी जेयं क्रियेयं फलभूत गुणव्यति ह्रियं देवी व्यञ्जको गुणभुभयं त्वं हि सर्वो सैख्याता श्री शरीरेन्द्रियाश्रयः नामरूपी भगवती प्रत्यायस्तुपाश्रयः तथा युवांतलोकेषु व्रतौ परमेष्ठिनौ यथा उत्तम श्लोका सन्तु सज्जो महाशीष इत्यादि शिवप्रदं श्रीनिवासं शिवसवो तमिसोहौ परणं दत्त्वा त्वमन्यर्थे भवति जीव श्लोकेनो भक्ति प्रयेनो चेतसा यज्ञो उपशिष्टे परग्राह पुनरभ्यासेद्धरि पतिञ्च परया भक्त्या महापुरुषचेष्टया प्रियैस्तशिष्यै प्रणमेत् प्रेमशीला स्वयं पति बिभ्रियात् सर्वकर्माणि पत्य उच्चावसानि कृतमेकवतेनापि दम्पती उभयोर्विवाह पत्न्यां कुर्जातनहर्जां पतिरेतः समाहित विष्णोर्व्रतमिमं विभ्रंशो यन्चार्कथञ्चनो विप्रांसियो वीरमतिं स्रग्गन्धा बलिमगुनि अर्चेना हर हर भक्त्या देवं नियमास्थिता उद्वैषदेवं देदेयी तस्मिन्नेव बोध्यग्रत अज्ञातात्मा विशुद्ध्यार्थं सर्वकामो समुद्धे एतेन पूजा विधिनामासान् द्वादशान् नीत्वा से विषया शाब्दिके कार्तिके शर्मे हनि सूटमिस्यो उपशिष्यो कृष्णामद्विषपूर्वत् परोषि तेनो जूयाचारुणा सौ सर्प्या पाकसभ्येन द्वारसे बाहुतिपति आशीषो शिरासायु बीजैर्प्रीतैः समीरिता प्रणेम शिरसा भक्त्या भुनीतो तनुज्ञया आचार्य मठग्रस्ता कृत्वा वाक्यतोषो वन्दिभिः दज्जात् पत्नी सर्वशेषं सुप्रजष्टं सुसौभगम् एतत्करित्वा विधिवद्दाव्रतं बिभ्रति बिभ्राट्ठं लभते पुमानि श्रीचैतन्यसाराय लभेतो सोतं श्रियां प्रदां बीजपतिं दशोग्रिणं कन्यासु विन्देतो समलक्षणं पतिं तविसा हठकिल्यसा पतिं नीचप्रजा जीवासा अनेश्वरी सुदुर्भगा नीचगारूपमग्निचो मयि विन्देत रूपिणा वीरोहामुच्यते अमरावीन्द्रदेहिनं येतर्पथन्न अभ्युदे स्वकर्मण्या तृप्ति पितृदेवतानां दृष्ट्वा प्रसन्ति समस्तकामान् होमवसाने हुतभो श्रीहरिच राजन्मरुतिं जन्मो पुण्यं गीतेर्व्रतं चाविर्हितं महत्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रत कथन 19 अध्याय श्रीमद्राधागुण कृष्ण प्रजानंद बल हरि बोल हरि बोल।
Sri